Okay, so till now we have covered the first four cases of shortcut method. Okay, in which our first case is exponential function, second case is a raised to x or a raised to minus x function, third case is trigonometric function like say sine and cos. Okay, and fourth case is hyperbolic function like say sine hyperbolic and cos hyperbolic. Okay, in today's lecture we try to cover the fifth and sixth case. Okay, that is and the fifth case is polynomial function. Okay, a polynomial function means a function like say x cube plus 3, x square minus 2x plus 4, like this. Okay, okay, and for polynomial function we have to use this formula 1 upon 1 plus x. This is actually series expansion of 1 upon 1 plus x and series expansion of 1 upon 1 minus x. Okay, जैसे आपके पास sin x की सीरीज है, cos x की सीरीज है, e raised to x की सीरीज है. In a similar way, okay, here we need to use this series expansion of 1 upon 1 plus x and series expansion of 1 upon 1 minus x. Okay, just for a minute. And here also there is a restriction on x. Okay, in both this series expansion. Okay, in both this series expansion, this mod x, okay, modulus value of x is less than 1. Okay, but मैं वो पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सारे केसेस में वो अंडर कंसिडरेशन ही आने वाला है. आपको कहीं पे ये चेक करने की जरूरत है कि mod x की वैल्यू क्या है. ओके, सो दैट इज नॉट इन सिलेबस. ओके, सो डायरेक्टली आप 1 upon 1 plus x का और 1 upon 1 minus x की जो सीरीज एक्सपांशन है ये फॉर्मूले आपको बस याद रखने हैं. And this case of failure is again a common part for all these cases. Okay, when your denominator is 0, in that case you need to multiply that particular integral by x, and after that you have to replace denominator by its derivative. Okay, so let's begin with the fourth case, polynomial function. Remember, this is your in general polynomial function of degree n. Okay, an x raised to n, an minus 1, x raised to n minus 1, an minus 3, x raised to n minus 2, and so on up to constant one. You know, this is the in general polynomial function of degree n. Now this is our f of x, and we have to find the particular integral of this function. Okay, now let's discuss the steps to find the particular integral for the polynomial functions. And to do this, let's consider the particular integral, the general formula or the formula to find the particular integral, that is yp is equal to 1 upon phi of t times f of x. Okay. In this case, our step 1 is like this. In this case, first we need to convert phi of t in terms of 1 plus something. Okay, this is a gamma of t, but basically इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको phi of t को 1 plus something में कन्वर्ट करना है और 1 plus gamma of t में कन्वर्ट करना है. कैसे करोगे? Okay, by taking lowest degree term common from the phi of t. Okay, मैं आपको एग्जाम्पल्स में क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ. phi of t में से okay, जो आपका लोवेस्ट डिग्री टर्म है, okay, वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको एग्जाम्पल के टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ. सो फ्रॉम phi of t just calculate the lowest degree term. For example, your lowest degree term is say 4. 4 is the constant whose degree is 0. Any constant term has degree 0. So let consider the lowest degree term as 4. तो आपको करना क्या है, phi of t में से okay, from all the terms of phi of t just take 4 common. जैसे आप 4 को कॉमन लेते हो, जो भी नंबर आप कॉमन लेते हो उस नंबर की जगह पे ऑटोमेटिकली क्या आने वाला है 1. ओके, और रिमेनिंग जो भी पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज गामा ऑफ टी. या सिंपली फर्स्ट स्टेप का मीनिंग क्या है, इन फर्स्ट स्टेप जस्ट कन्वर्ट phi of t in terms of 1 plus something by taking a lowest degree term common. And in next step, okay, so here I consider that lowest degree term as say delta of t. These are just the notations, don't confuse with your notations. Okay, जो भी common part है उसका मैंने यहाँ पे delta बोला and 1 plus something times f of x. Now in bracket whatever here you will get, okay, that term look like 1 upon 1 plus x. है ना, bracket में जो भी आपके पास अभी आ रहा है it look like 1 upon 1 plus x. So using the series expansion of 1 upon n plus 1 upon 1 plus x, which is 1 minus x plus x square minus x square and so on. Okay, ये सीरीज एक्सपांशन का यूज करके फिर आपको ये ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करना है. So in some cases here you may get 1 upon 1 minus something. Okay, in some cases you may get here 1 upon 1 minus x. तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या है, 1 plus x square plus x square and so on. तो फॉर्मूला बस आप अच्छे से याद रखो. डिनोमिनेटर में अगर माइनस साइन आता है तो सारे टर्म्स में प्लस साइन है. डिनोमिनेटर में अगर प्लस साइन आता है सो
we need to consider the alternatively plus and minus sign. This is the series expansion of 1 upon 1 plus x and 1 upon 1 minus x. Okay, ये theory का part है, आपका example से ये सारी चीज़ आपकी clear हो जाएगी. Okay, so let's take one simple example. So consider a question like this: solve d square minus 2d plus 5 times y is equal to 25 x square. This is our question. So in solution, first we need to find the complementary solution or the complementary function, and for that consider the auxiliary equation, which is 5d is equal to 0. This implies d square minus 2d plus 5 equal to 0, and just calculate the roots of this polynomial from either calculator or up manually karo. Okay, so the roots of this polynomial is 1 plus or minus 2r. So this is one single complex root. Okay, so its corresponding complementary function is yc is equal to e raised to real part is 1, so real part time x, so e raised to 1 into x in bracket c1 cos of imaginary part, which is 2, so cos 2 times x plus c2 sin 2 times x. Formula आप अच्छे से देखो from the last lectures. E raised to alpha x c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x. This is the complementary function corresponding to complex root. Now let's find the particular integral. Our formula is like this: 5 is equal to 1 upon 5t times f of x. Correct. Replace 5t by the value d square minus 2d plus 5 f of x by the value 25 x square. Okay. Now what is our first step? Okay, so here you can see on the right side of this differential equation, okay, you will have the polynomial function. 25x square is a polynomial function of degree 2. करेक्ट. तो यहाँ पे इतना ये कि इस polynomial function में बस एक ही टर्म है. आगे नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे तो polynomial function में एक से ज़्यादा भी टर्म्स आएंगे. ओके, सो व्हाई आई यूज दिस मेथड और दिस केस, बिकॉज दिस इज आवर polynomial function. तो आप देखो सारे केसेस में डिफरेंट फंक्शंस में ले रहा हूँ. एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट किया था, साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक. नाउ वी केम टू पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज आवर स्टेप 1? ओके, वो सेम स्टेप यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ सेम स्लाइड में. स्टेप 1 आपकी क्या थी? इन दिस केस वी नीड टू कन्वर्ट phi of t in terms of 1 plus d of t by taking the lowest degree term common. ओके, तो ये आपका phi of d है, d square minus 2d plus 5. d square की डिग्री क्या है? 2. करेक्ट. 2d की डिग्री क्या है? 1, जो d की पावर है वो 5. यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पे अगर d का टर्म रहता भी है तो d की डिग्री क्या आएगी? 0. सो दिस 5 which is a constant. ओके, दिस टर्म हैज डिग्री 0. करेक्ट. फर्स्ट टर्म की डिग्री 2, सेकंड टर्म की डिग्री 1, थर्ड टर्म की डिग्री 0. तो लोवेस्ट डिग्री टर्म आपका कौन सा हो गया यहाँ पे? +5. सो जस्ट टेक 5 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. विल गेट particular integral like this. So 1 by 5. Here I take 5 common from the denominator. जो भी टर्म आप कॉमन लेते हो उसके जगह पे इमीडिएटली क्या आने वाला है? 1. So instead of 5 you just consider 1 here, and this whole part d square minus 2d, this whole part is divided by 5. Simply बस मैंने क्या किया? From denominator I just take 5 common. Okay. Now this bracket term it will look like 1 upon 1 plus x. Now and we have the series expansion for 1 upon 1 plus x. क्या है वो expansion? 1 minus that whole x plus x square minus x cube and so on. So if I use this formula for capital X, so here capital X is d square minus 2d by 5. So 1 minus x plus x square minus x cube and so on. अभी क्वेश्चन क्या है कि सीरीज एक्सपांशन में मैंने यहाँ पे स्क्वायर तक ही कंसीडर किया. ओके, व्हाई आई डिलीट दिस रिमेनिंग टर्म्स? ओके, इसका रीजन क्या है? सिंस अवर पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है 25x स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या है? 2 ही डिग्री है. तो आप क्या करो? सीरीज एक्सपांशन में ही अप टू डिग्री 2 तक ही एक्सपांशन कंसीडर करो. इसलिए मैंने x क्यूब ऑनवर्ड्स जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स को डिलीट किया. ओके, आप अच्छे से रीजन सुनो. Since a given polynomial has degree 2, so in case of expansion I consider terms up to degree 2. तो इसलिए मैंने 1 minus x plus x square इतने टर्म्स कंसिडर किए, आगे के टर्म्स को मैंने डिलीट किया या डॉट डॉट में एडजस्ट किया. And this 25x square as it is. Now next step, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ. अभी आपको करना क्या है? इन नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस d square minus 2d raised upon 5 whole square. तो इसमें से आप क्या करो? You can take 5 square outside, okay, and if you simplify this
you will get simplification like this. Okay, 1 5 एज इट इज, यहाँ पे भी नीचे 5 था, 5 को मैंने आउटसाइड रखा है ब्रैकेट के. So 1 by 5 times d square minus 2d plus 1 by 25 because in denominator you will have 5 square. That 5 square in outside of this bracket. So 1 by 25 d square minus 2d whole square minus dot 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 25 x square. Now again simplify this a minus b whole square. Remaining part as it is 1 minus 1 by 5 times d square minus 2d plus 1 by 25. This a minus b whole square and this expansion is a square minus 2ab plus b square. Simple expansion आपको समझ में आ जाएगा. a square minus 2ab plus b square operated on 25 x square. अब इसके आगे आपको करना क्या है, ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर इनमें से भी आप कुछ टर्म्स को डिलीट कर सकते हो. ओके, कैसे? क्योंकि जो गिवन पॉलिनोमियल है, सिंस आवर गिवन पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, ओके, कैपिटल डी का मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव. तो जब भी आप डी स्क्वायर को ऑपरेट करते हो तो डी स्क्वायर का मीनिंग क्या है? डबल डेरिवेटिव. When you operate d raised to 4, it means fourth derivative. When you operate d cube, it means third derivative. Okay? तो इन सारे टर्म्स में कैपिटल डी आ रहा है. कैपिटल डी का मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव. ओके, बट आपकी जो पॉलिनोमियल है जिसके ऊपर आप ऑपरेट करने वाले हो, ओके, दैट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 ओनली. इट मींस ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड अबव. थर्ड, अगर 25x स्क्वायर का आप चेक करो, थर्ड डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 0. फोर्थ डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 0. सो रिजल्ट क्या है? सिंस अ गिवन पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड अबव आर 0. तो इसका मतलब d3 की वैल्यू डायरेक्टली क्या आएगी? 0. d4 की वैल्यू क्या आएगी? 0. इसलिए ये सारे टर्म्स को आप डिलीट करो एंड जस्ट सिंपलीफाई दिस. ओके, सो 1 माइनस यहाँ पे d स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज प्लस 2d by 5 एज इट इज. यहाँ पे मैंने d raised to 4 को डिलीट किया बिकॉज अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 ओनली. यहाँ पे d क्यूब को भी मैंने डिलीट किया बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 ओनली. आई जस्ट कंसीडर 4d स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज 4d स्क्वायर by 25 एंड होल ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 25x स्क्वायर. ओके, जस्ट सिंपलीफाई दिस ब्रैकेट. सो d स्क्वायर, तो ये बस इन दोनों टर्म्स की एडिशन करो, यू विल गेट 1 minus d square by 25 plus 2d by 5 operated on 25x square. And now apply this 25x square on each term. So this become 1 times 25x square is 25x square. D square upon 25 operated on 25x square. 2d upon 5 operated on 25x square and just simplify this. Okay, so in next step 1 by 5 25x square. Okay, minus this 25. Okay, wait. So this 1 by 25 as it is, correct? 1 by 25 as it is. इस स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? डबल डेरिवेटिव. सो 25x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? 50x. सिंपल है, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन में नहीं डाला है. d स्क्वायर का मीनिंग क्या है? डबल डेरिवेटिव. तो बेसिकली करना क्या है? 25x स्क्वायर को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है. सो 25x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 50x एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज जस्ट 50. ओके, सो d स्क्वायर 25x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 50 ओनली. ओके, सिमिलरली 2 by 5 as it is, 2 by 5 as it is. d of 25x square, d का मीनिंग क्या है? सिंगल डेरिवेटिव. सो 25x स्क्वायर का सिंगल डेरिवेटिव क्या है या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? 50x. सो 50x is the value of d 25x square and multiply by 2 by 5, your final calculation is 20x. I hope you will understand this. Okay, या सिंपली इसमें बस क्या याद रखो कि d स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 25x स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करना है. d का मीनिंग क्या है? 25x स्क्वायर को आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है. And just by simplification you will get this. Okay, so your final answer is yp is equal to, I just multiply this by 5x square minus 2 by 5 plus 4x. Okay, and if I consider the general solution which is yc plus yp equal to, this is your complementary solution plus this is your particular solution. Okay, so this is the first example of polynomial function. Take one more example. So solve the differential equation d2y by dx square minus dy by dx plus y is equal to x cube minus 3x square plus 1. Again on RHS here you can see this is your polynomial function. Okay, so you can find particular integral of this by using shortcut method. Okay, so in solution first simplify this given differential equation. To do that, let's put d equal to d by dx, capital D equal to d by dx. So this after simplification you will get d square minus d plus 1 in bracket times y is equal to x cube minus 3x square plus 1. Right? Now consider the auxiliary equation to find the complementary function.
which is phi of d equal to 0, that is d square minus d plus 1 equal to 0. If I solve this, we'll get d equal to 1 plus or minus root 3 divided by 2. Okay. And the corresponding complementary function e raised to real part is 1 by 2. So e raised to real part times x, c1 cos of imaginary part, which is root 3 by 2. So c1 cos of root 3 by 2 times x plus c2 sin of root 3 by 2 times x. So this is our complementary solution. Okay. What happens here, we have to find the particular integral by using shortcut method. So in particular integral, our formula is yp is equal to 1 upon phi of d times f of x. Okay. Replace phi of d by this value, d square minus d plus 1, operated on the polynomial x cube minus 3x square plus 1. Correct. So here also, what is our step 1? Since our function is a polynomial function, okay, so we have to write this phi of d in terms of 1 plus something. ये already 1 plus something के फॉर्मेट में, यहाँ पे आपको कुछ लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेकर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो ऑलरेडी दिस phi of d is of the type 1 plus something. तो मैं बस टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस इन ब्रैकेट d स्क्वायर माइनस d. तो वो ऑलरेडी उस फॉर्मेट में आ रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सीरीज एक्सपांशन ऑफ 1 upon 1 plus x. So in next step, so I consider the same particular integral. So here just apply a series expansion of 1 upon 1 plus x, which is 1 minus x plus x square minus x cube and so on. Okay. पर अभी आपको पहले क्या डिसाइड करना है कि इस सीरीज एक्सपांशन में आपको कितने टर्म्स कंसिडर करने हैं. Okay. वो कैसे करना है? Since a given polynomial has a degree 3, तो आप सीरीज एक्सपांशन भी कहाँ तक कंसिडर करो? अप टू डिग्री 3. So here 1 minus x plus x square minus x cube plus dot dot dot. तो रिमेनिंग टर्म्स अभी के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ. Why consider up to degree 3? Because a given polynomial has a degree 3 and operated on x cube minus 3x square plus 1. Okay. Now first simplify this bracket term. Okay. So this is the big simplification of this. 1 minus d square plus d. This is a minus b whole square. A square minus 2ab plus b square. This is a minus b whole cube. That is a cube minus 3a square b plus ab square minus b cube. ये सिंपल रिजल्ट से आपको समझ में आ जाएंगे. हाँ, अभी आपको करना क्या है? इनमें से कुछ टर्म्स को आपको डिलीट करना है. ओके, यू डिसाइड दैट पार्ट. सिंस अ गिवन पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 3, सो ऑल द डेरिवेटिव टर्म्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड अबव. डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, मतलब डेरिवेटिव 4 क्या आएगा? 0. डेरिवेटिव 5 क्या आएगा? 0. इट मींस ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड अबव आर 0. तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिग्री 4 ऑनवर्ड्स जितने भी डेरिवेटिव्स है सारे डेरिवेटिव्स को डिलीट कर रहा हूँ. ओके, क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी. यहाँ पे डी रेज़ टू 4 को डिलीट कर रहा हूँ, माइनस 2d क्यूब ओनली प्लस डी स्क्वायर माइनस डी रेज़ टू 6 को डिलीट कर रहा हूँ, 3d रेज़ टू 5 को डिलीट कर रहा हूँ डिग्री 4 ऑनवर्ड से, 3d रेज़ टू 4 को भी डिलीट कर रहा हूँ. तो सेकंड एक्सपांशन से आपको बस एक ही टर्म मिलेगा माइनस डी क्यूब एंड माइनस माइनस बिकम प्लस. ओके, सो यू विल गेट दिस. इसमें भी क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? माइनस 2d क्यूब प्लस डी क्यूब बिकम माइनस डी क्यूब minus d square plus d square will get cancelled. So after this we will get 1 plus d minus d cube operated on x cube minus 3x square plus 1. Now multiply each term with this polynomial. 1 into this polynomial plus d into this same polynomial minus d cube into this same polynomial. Okay. So d का मीनिंग क्या है? Just one derivative. d cube का मीनिंग क्या है? 3 differentiate this polynomial 3 times. I can say a third derivative of this given polynomial. Okay. So this after simplification become this first polynomial as it is x cube minus 3x square plus 1. Okay, the first derivative of this polynomial is 3x square minus 6x. One का derivative 0. And the third derivative of this polynomial is यहाँ पे 3x square का third derivative 0 आएगा, constant का 0 आएगा, x cube का third derivative आता है 6. And after simplification you will get yp is equal to x cube minus 6x minus 5. So the final solution y is equal to y plus yp, which is this is your complementary function plus this is your particular integral. Okay. तो इसमें जो मेजर कैलकुलेशन आता है ना, वो एक्चुअली ये सिंप्लीफिकेशन का ही आता है कि आप 1/1 plus x का फॉर्मूला यूज करने के बाद ओके टर्म्स को कैसे डिलीट करते हो, कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हो, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट ओनली. ओके,
अदरवाइज फिर ये कैलकुलेशन एंड जनरली ऐसे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल फंक्शन। सिंपल है और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको ट्यूटोरियल में ले लेता हूँ या एज असाइनमेंट मैं कंसिडर करता हूँ, ज़्यादा नहीं है उस टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल। लास्ट जो 2 केसेस है, दिस इज एक्चुअली सेकंड लास्ट केस, केस नंबर 5। ओके सॉरी, यहाँ पे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, ये मिसप्रिंट हुआ है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट केस इज हियर, जस्ट वेट, आई चेंज दिस। So here now onwards we consider a combination of 2 functions. The last 2 cases, case number 5 and case number 6, these 2 cases are very important as far as your theory exam is concerned. Okay, ज़्यादातर questions आपको last 2 cases में आ जाते हैं, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। अभी क्या होगा, सो केस नंबर 5 ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जाम्पल्स आपको आने वाले हैं ना, ओके, उन सारे एग्जाम्पल में सो केस नंबर 5 मतलब केस नंबर 1 2 3 4, ओके, इन सारे केसेस के रिजल्ट्स आपको यूज करने, ठीक है, क्योंकि ये सारा कॉम्बिनेशन में आने वाला है। ऐसा नहीं कि केस नंबर 5 के क्वेश्चन आपको केस नंबर 5 के ऊपर ही रहेंगे, इसमें कुछ ऐसा भी पार्ट आएगा जिसमें आपको प्रीवियस केस का भी यूज करना है, केस नंबर 4 विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन में भी आपको केस नंबर 3 का भी यूज करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन, केस नंबर 2 का भी यूज करना है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एंड कॉस, और मे बी यू नीड टू यूज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ए रेज़ टू एक्स फंक्शन। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में आता है, इसलिए लास्ट 2 केसेस में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, so the formula is like this. So now onwards our function is in this product form. Okay, so consider a function of the type e raised to ax multiplied by v. Okay, a function in which one function is exponential function and other function is any random function of x. Okay, इसको आप रीड कैसे करोगे? अभी जो यहाँ पे f of x आ रहा है, इसमें 2 टाइप के फंक्शन है। Okay, first function is the exponential function, okay, and second function is any random function of x, or I can say a function which is multiplied by exponential function or e raised to ax function. Consider any function which is multiplied by e raised to ax function. So in this case our particular integral yp is equal to 1 upon 5 of d e raised to ax into v. Okay, this particular integral is equal to, इसका फॉर्मूला क्या है, पहला आपका जो e raised to ax है उसको as it is आप आउटसाइड कंसिडर करो, outside to all these terms. Okay, e raised to x को आप क्या करो, डायरेक्टली सारे टर्म्स के बाहर कंसिडर करो, एंड देन रिप्लेस d बाय d प्लस दिस a। तो ये आपका मे बी पॉजिटिव होगा, मे बी निगेटिव होगा, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, e raised to x को आपने पहले बाहर कंसिडर किया है, और नीचे phi of d में जहाँ पे d था, d के जगह पे आप क्या पुट करने वाले हो, d प्लस a एंड इनटू दिस v एज इट इज। सो दिस इज योर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 5 ऑफ d ऑपरेटेड ऑन e raised to x into v। ओके, आई होप कि आपको फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है, कैसे अप्लाई करना है एग्जांपल्स में इमीडिएटली लेने वाला हूँ। ओके, e raised to x को डायरेक्टली बाहर कंसिडर करो, ओके, d को रिप्लेस करो बाय d प्लस a एंड ऑपरेटेड ऑन v एज इट इज। अभी यहाँ पे इसलिए मैंने स्पेशली ऐड किया है, जो नेक्स्ट पार्ट आपका जनरेट हो रहा है 1 अपॉन 5 इन ब्रैकेट d प्लस a ऑपरेटेड ऑन v। ओके, ये जो पार्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ओके, सो ये पार्ट आपको अभी सॉल्व करना है फ्रॉम द प्रीवियस केसेस। ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जनरेट हो रहा है ना, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल यू नीड टू सॉल्व बाय यूजिंग द प्रीवियस 4 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि ये जो 5th केस है, दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस केसेस। ओके, डिफिकल्ट नहीं है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। नाउ सॉल्व d square minus 4d plus 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू x क्यूब e raised to 2x। ओके, पहले ये देखना है कि आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये केस नंबर 5 का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई किया। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन आ रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 ही फंक्शन चाहिए। मैंने आपको रिजल्ट क्या बोला है, कंसिडर एनी फंक्शन विच इज मल्टीप्लाई बाय e raised to ax। सो x क्यूब इज द सेकंड फंक्शन विच इज मल्टीप्लाई बाय e raised to ax। So consider any function which is multiplied by e raised to ax। अगर यहाँ पे e raised to ax नहीं आता है, so this is not the question on case number 5, correct?
So this is the example on case number 5. So e raised to x is your first function, and automatically this x cube become v, capital V. Okay. So first find the complementary solution. So consider the auxiliary equation phi of d is equal to 0. Okay. So this polynomial can be factorized as a d minus 3, d minus 1. Therefore the roots are d equal to 3, 1. Corresponding complementary function is c1 e raised to 3x plus c2 e raised to x. Both are the distinct real roots. Therefore its corresponding complementary function is like this. Now consider the particular integral. Okay. So our particular integral is yp is equal to 1 upon phi of d operated on f of x, correct? That is yp is equal to 1 upon d square minus 4d plus 3 operated on x cube e raised to 2x. अभी एक्चुअली आपको फॉर्मूला यूज करना है. आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में आ गया. सो नाउ वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला भी यहाँ मैं ले लेता हूँ. वेट में आपको एक ही स्लाइड पे दिखाता हूँ. अभी आगे क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है. तो यहां तक आपने किया. नाउ सी ऑन RHS we have the function x cube e raised to x. Okay, so e raised to x is this and v is your second function, so x cube actually क्या आपका कैपिटल V. Okay, तो रिजल्ट क्या है? e raised to x को एज इट इज बाहर कंसीडर करो तो ये e raised to 2x आपका यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट. और जहाँ पे d था, d के जगह पे क्या आएगा? d plus a. बट a की वैल्यू क्या है? इफ यू कंपेयर विद दिस योर a is 2, तो d रिप्लेस किससे हो जाएगा? d plus 2. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए? यहाँ पे आ जाएगा e raised to 2x, यहाँ पे आएगा d plus 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट d plus 2 plus 3 एंड यहाँ पे राइट साइड में बस क्या रहेगा? ओनली x क्यूब. आप अच्छे से कंपेयर करो. e raised to x बाहर जाएगा, d के जगह पे आएगा d plus 2 और ये v मतलब x क्यूब एज इट इज. सो नाउ कंसीडर दिस. e raised to x आपका बाहर आ गया. 1 अपॉन यहाँ पे पहले d था, d की जगह पे आ रहा है d plus a और d plus 2 this x cube as it is. Now first simplify this denominator. Okay, so if you simplify this denominator you will get d square minus 1. ये कैलकुलेशन आप चेक करो. Okay, so if you simplify this denominator just consider a plus b whole square, so it is very trivial. So if you simplify this you will get d square minus 1 operated on x cube now, correct. अभी ये जो पार्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है 1 अपॉन d square minus 1 x cube, ये आपको प्रीवियस 4 केसेस से सॉल्व करना है. Okay, case number 5 is not any a separate case. Case number 5 is actually the combination of first 4 cases. Okay, अभी 1 by 1 चेक करो. अभी 1 upon d square minus 1 ये आपका phi of d है. phi of d is d square minus 1. आपने ऑपरेट किया x क्यूब के ऊपर, तो कौन से केस में ये फिट हो रहा है? केस नंबर 1 इज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे तो x क्यूब है, इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. केस नंबर 2 इज फॉर a raised to x फंक्शन, तो वो भी नहीं है. नेक्स्ट केस आपकी थी साइन फंक्शन के लिए, साइन कॉस फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, वो भी पार्ट नहीं है. जो आपकी प्रीवियस केस थी अभी के लेक्चर में जो हमने लिया था दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन. तो आपको समझ में आ रहा है कि x क्यूब इज दी पॉलिनोमियल फंक्शन. तो ये जो पार्ट आपका आ रहा है ये रेस्ट टू x आपका बाहर मतलब सारे टर्म्स के बाहर है, तो ये एंड तक ऐसे ही रहेगा. देयर इज नो चेंज इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to 2x. आपको कैलकुलेट बस ये पार्ट करना है 1 upon d square minus 1 operated on x cube. So this is a polynomial function. So polynomial function तो आपके स्टेप 1 क्या है? Convert a phi of d in terms of 1 plus something या 1 minus something. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? I just take minus common. So this can be written as minus e raised to 2x 1 upon 1 minus something. ठीक है? Now consider the formula of 1 upon 1 minus x. Okay? पॉलिनोमियल फंक्शन में आपकी स्टेप 1 क्या थी? पहले 1 प्लस या 1 माइनस समथिंग में कन्वर्ट करो. नेक्स्ट आपको करना क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज करो या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला आप यूज करो. ओके, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको यूज करना है विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. Okay, but since a given polynomial has degree 3, so consider a series expansion up to degree 3. 1 plus x square. Okay, एक्चुअली आप चाहो तो एक और टर्म कंसिडर करो, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिलीट किया है क्योंकि उसकी डिग्री क्या जा रही है? ग्रेटर देन 3 जा रही है. तो अब ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट टर्म स्किप करो. एट द एंड ओके वी नीड टू कंसिडर दोज टर्म्स व्हिच डिग्री इज लेस इक्वल 3.
यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, सिंस अ गिवन पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, ठीक है, तो इसलिए डिग्री 4 ऑनवर्ड्स जितने भी डेरिवेटिव आ जाते हैं वो सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी रेज़ टू 4 को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, वही रिजल्ट यहाँ पे दिया है। सो डी रेज़ टू 4 को डिलीट करो, यू विल गेट माइनस ई रेज़ टू 2x 1 प्लस डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब। बाकी सारे टर्म्स की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उनकी वैल्यू क्या आएगी 0। नाउ ऑपरेट दिस एक्स क्यूब ऑन ईच टर्म, will get x cube plus d square x cube. d square का मीनिंग है डबल डेरिवेटिव, so this become x cube का फर्स्ट डेरिवेटिव 3x square, second derivative is 6x. This is your final yp, and therefore the final y is equal to yc plus yp, that is equal to complementary function plus particular integral. Okay, so actually यहाँ तक ही मतलब इसके this step onwards, okay, this step onwards आपके previous केस ही जा रही है और इसके पीछे का कैलकुलेशन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बस मैंने इस टर्म को बाहर लिया है और डी के जगह पे डी प्लस ए पुट किया है। सो केस नंबर 5 इज नॉट एनी न्यू केस फॉर यू। केस नंबर 5 इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 4 केसेस, इसलिए आपके अगर पहले 4 केसेस अच्छे से हो जाते तो ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। एक नंबर क्वेश्चन, इसके थ्योरी एग्जांपल ज्यादा है। So d cube y upon dx cube minus 7dy by dx minus 6y is equal to e raised to 2x in bracket 1 plus x. So in solution, first calculate auxiliary equation. अभी मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, सॉरी यहाँ पे चलो just consider here, okay, I will correct it. But I will correct this statement first. So question number 2, in solution first consider the first simplify this differential equation, and to do that just put capital D equal to d by dx. Okay, कुछ तो wrong step में मैंने correction किया है। Okay, so this differential equation became already corrected था, sorry. So this become d cube minus 7d minus 6 times r is equal to e raised to 2x 1 plus x. Okay, and now consider the auxiliary equation, already a simplified form. Okay, consider the auxiliary equation which is phi of d equal to 0, that is d cube minus 7d minus 6 equal to 0. Let's find the you can find these roots from scientific calculator also. Okay, एग्जाम में रूट्स डायरेक्टली कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हो, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो। So d equal to -1, -2 and 3. Therefore, all three roots are distinct. Therefore, the corresponding complementary solution is c1 e raised to minus x plus c2 e raised to minus 2x plus c3 e raised to 3x. Our focus is on particular integral. So, particular integral yp is equal to 1 upon phi of d times f of x. So, let's consider this first. So, yp equal to 1 upon phi of d, so look at d cube minus 7d minus 6. Our function is e raised to 2x 1 plus x. अब इसमें भी आप चेक करो, यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है that one function is exponential function, so this can be solved using case number 5 of the shortcut method. Okay, आपका फॉर्मूला क्या है, आप e raised to x को आपको बाहर लेके आना है. Okay, so consider e raised to x outside to all these terms, so e raised to 2x is here, and now in phi of d replace d by d plus a. a की वैल्यू यहाँ पे अभी भी क्या है 2 आ रही है, so replace d by d plus 2, so this become d plus 2 cube minus 7 d plus 2 minus 6 as it, and this 1 plus x as it. ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे d की जगह पे d plus a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2. अगर यहाँ पे e raised to minus 2x आ जाता है तो यहाँ पे चेंज क्या होता है d minus 2 d minus 2.
If you simplify this denominator, you will get d cube plus 6d square plus 5d minus 12. Okay. Now, okay, and now on RHS, okay, our function is 1 plus x, which is a polynomial function. So hence onwards, we solve this particular integral by using case number 4, which is a polynomial function case, okay, in the shortcut method. तो उसके लिए आपको पहले करना क्या है? Our step 1 is first write this phi of d in the form of 1 plus something. And to do this, okay, let's take the lowest degree term common. फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है 3, सेकंड टर्म की डिग्री क्या है 2, थर्ड टर्म की डिग्री क्या है 1 एंड फोर्थ जो आपका टर्म है उसकी डिग्री क्या है 0. सो हियर वी नीड टू टेक -12 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो दिस कैन बी रिटन एज e raised to 2x as it is -1/12 एंड जो पार्ट आपने कॉमन लिया है उसकी जगह पे ऑब्वियसली क्या आएगा 1. सो दिस वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय 1. दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय -12. दिस माइनस अपॉन 12. ठीक है. सो इफ आई टेक -12 कॉमन यू विल गेट दिस टर्म. And now just consider the formula of 1 upon 1 minus x. Correct? So this formula is like this. Okay, so the formula is like this. 1 upon 1 minus x. Formula आपका क्या है? 1 plus x square plus x cube plus x raised to 4 and so on. Okay? But यहाँ पे जो आपकी polynomial है उस polynomial की डिग्री क्या है 1. करेक्ट. तो आपको एक्सपेंशन कहाँ तक करना है? अप टू डिग्री 1. तो यहाँ पे इसलिए मैंने दो ही टर्म्स कंसिडर किए 1 प्लस x ओनली. सो फ्रॉम दैट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x कंसिडर ओनली टू टर्म्स विच इज 1 प्लस x. बट x की वैल्यू यहाँ पे बिगर फॉर्म में d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 12. आगे के टर्म्स वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि उसकी डिग्री क्या है ग्रेटर दैन 2. नाउ in next step, okay, ये कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. So here you can see this polynomial has degree 1. So all the derivatives of order 2 and above. So 2 onwards जितने भी derivatives आ जाते हैं उन सारे derivatives की वैल्यू क्या आएगी 0. ऑलरेडी आपकी polynomial की डिग्री 1 है इसलिए d क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 0. इसलिए 6d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखो 5d अपॉन 12. डायरेक्टली क्या लिखा है 1 plus 5d upon 12 because a polynomial has degree 1 only. And now multiply each term by this polynomial 1 plus x. So 1 times 1 plus x and 5 divided 12 times 1 plus x. Okay. So 1 plus x as it is 5 by 12 as it is. d of 1 plus x. X means what? The first derivative of 1 plus x. वो क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1. So only 5 by 12. And if you simplify this, you will get e raised to -2x upon -12 in bracket x plus 17 by 12. So the final solution is y equal to yc plus yp. c1 e raised to -x plus c2 e raised to -2x plus c cube e raised to 3x minus time this. ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो इसलिए कुछ और भी डिफिकल्टीज आ जाए तो वो क्लियर हो जाएगा. Okay. So here I take one more example because this method is very important as far as your theory part is concerned. So next question is solve d square minus 4d plus 4 times y is equal to e raised to x cos square x. Okay. अभी ये जब आप टर्म देखते हो ना cos square x, एक रिजल्ट मैंने आपको केस 2 में sin and cos x का जब पार्ट चल रहा था तो उसमें मैंने एक रिजल्ट आपको दिया था कि कुछ ऐसे फंक्शन है जिनको आपको रिप्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल sin a cos b तो उसका फॉर्मूला आप यूज करो. cos a cos b अगर वो टर्म आता तो उसका फॉर्मूला आप यूज करो. sin a cos b cos a sin b, ओके, sin a sin b, वो सारे 4 पॉसिबल ये थे ना फॉर्मूलेस थे तो उनमें करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आपको यूज करना है. और उसके बाद मैंने और 2 टर्म्स ऐड किए थे कि अगर कहीं पे sin स्क्वायर x का टर्म आता है तो आपको क्या रिप्लेस करना है और आप कहीं पे अगर cos स्क्वायर x का टर्म आता है तो आपको क्या रिप्लेस करना है. sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 minus cos 2x by 2 एंड cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है 1 plus cos 2x by 2. तो वो चेंज यहाँ पे आने वाला. तो एक बार आप साइन एंड कॉस का जो आपकी पीपीटी थी, ओके, वो पीडीएफ आप एक बार अच्छे से चेक करो तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा कि हियर आई नीड टू रिप्लेस cos स्क्वायर x बाय 1 plus cos 2x बाय 2. तो वो बाद में करने वाले हैं हम, बट ये देखकर ही आपको समझ में आना चाहिए. सो इन सॉल्यूशन कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन. Okay, roots are 2 2. Therefore complementary solution is c1 plus c2x e raised to 2x. अभी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. Now consider the particular integral which is y equal to 1 upon 5d times f of x, that is 1 upon d square minus 4d plus 4.
ओके, e रेस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 है, दिस इज एक्चुअली d माइनस 2 होल स्क्वायर। देख कर समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने रिप्लेस किया बाय द ओरिजिनल फॉर्मूला। सो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज एक्चुअली d माइनस 2 होल स्क्वायर, e रेस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है उसमें से एक फंक्शन आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये केस नंबर 5 से सॉल्व हो जाएगा। और अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, e रेस टू एक्स को आप बाहर कंसिडर करो, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, रिप्लेस d बाय d प्लस 1। क्या क्या चेंज होगा, दिस e रेस टू x we need to consider outside to all these terms, and now in the denominator part replace capital D by d plus a। so a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो replace d by d plus 1। this become e रेस टू x बाहर आ गया, d के जगह पे आ गया d plus 1 minus 2 as it is, whole square as it is, cos square x as it is, and if you simplify this denominator you will get d minus 1 whole square। but अभी आपको करना क्या होगा, क्योंकि आपको पता कि कोई भी एग्जांपल आने दो शॉर्टकट मेथड में, देयर इज नो सेपरेट फॉर्मूला फॉर cos स्क्वायर x। अगर cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin a cos b cos a cos b sin a cos b cos a sin b, इन सारे केसेस में आपको करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज करना है जो आपको हमने प्रीवियस एक पीडीएफ में दिया था। सो हियर रिप्लेस cos स्क्वायर x by 1 plus cos 2x by 2। ठीक है, सो इसमें 1/2 जो आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको आप डायरेक्टली बाहर लेके आओ। तो e रेस टू x by 2 as it is, 1 upon d minus 1 whole square as it is। अब यहाँ पे क्या रहेगा 1 plus cos 2x, क्योंकि 2 आपने बाहर लिया, बट 1 कैन बी रिटन एज e रेस टू 0। e रेस टू 0 की वैल्यू क्या है 1, तो दिस 1 कैन बी रिटन एज e रेस टू 0x and cos 2x as it is। ओके, अभी क्या करो, e रेस टू 0x और cos 2x, ओके, इन बिटवीन प्लस साइन है, तो 1 minus d minus 1 होल स्क्वायर आपका क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ओके, विद दिस प्लस साइन, तो 1 upon d minus 1 whole square operated on e raised to 0x, and same term operated on cos 2x। ठीक है, now this first term is actually case number 1, this second term is actually case number 3 या case number 2 आप बोल सकते हो, sin and cos का पार्ट। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का अगर फंक्शन आता तो आपको करना क्या है, d के जगह पे a पुट करो, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, तो जस्ट पुट d इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म आपका सॉल्व हो जाएगा, d के जगह पे 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 e रेज़ टू 0 इज 1, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी 1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये आपका केस 1 है, जस्ट पुट d इक्वल टू a। ये आपका अभी सेकंड केस है, इसमें आप क्या करते हो, d स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पुट करना है, सो फॉर साइन एंड कॉस फंक्शन, ओके, जस्ट पुट d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो d स्क्वायर टर्म चाहिए था, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले d माइनस 1 स्क्वायर को सॉल्व करके लेता हूँ, तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 cos 2x as it is। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, I just replace d minus 1 whole square by its expansion, d square minus 2d plus 1। Now we know that for sin and cos function just replace d square by minus a square, a की वैल्यू क्या है 2, माइनस a square की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4, तो d square की जगह पे आ गया माइनस 4। अदर टर्म्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, माइनस 2d प्लस 1 as it is operated on cos 2x। So if you simplify this you will get 1 minus 2d plus 3 cos 2x। आगे अगर आपको सॉल्व करना है, सिंस वी हैव साइन कॉस फंक्शन ऑन RHS, ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर का ही टर्म चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने लिया था सेम टॉपिक में। ओके, साइन कॉस के केस में अगर कहीं पे कैपिटल डी आ जाता है, ओके, बट देयर इज नो रिजल्ट फॉर डी, क्योंकि आप डी स्क्वायर को पुट कर रहे हो। ओके, तो ऐसे केसेस में एनी हाउ वी हैव टू जनरेट अ डी स्क्वायर टर्म इन द डिनोमिनेटर। तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर का टर्म जनरेट करना है। वो कैसे करोगे, टू डू दैट जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 2d minus 3 upon 2d minus 3। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, प्लस की जगह पे माइनस करो, सो 2d minus 3 से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो दिस cos 2x as it is। If you simplify this you will get 2d minus 3 numerator, this is a plus b, a minus b can be written as a square minus b square and cos 2x as it is। Now you can replace this d square by minus 4, नीचे क्या होगा 4 into minus 4 minus 9। If you simplify this you will get 25 cos 2x। अब एक और ऑपरेटर आपका रह गया यहाँ पे 2d minus 3, तो आप क्या करो 25 नीचे ही रखो, 2d मल्टीप्लाई बाय cos 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय cos 2x। मैंने क्या है 25 को नीचे रखा है, 2d मल्टीप्लाई बाय cos 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय cos 2x। तो d का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का मीनिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो d ऑफ cos 2x मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, वो क्या आने वाला है -2 sin
2x, -2 and 2 become 4. ओके, सिंपली बस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, cos 2x का एक डेरिवेटिव लेने वाला हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड इफ यू डू दैट you will get this -4 sin 2x minus 3 cos 2x upon 25. This is your final solution. I just rearrange this side. So final solution is y equal to yc plus yb. So this is your complementary function and this is your particular solution. Okay. So this is all about case number 5. So I will stop here now. Okay, and we'll take some questions. Can we replace, there is one question, in case 5, can we replace d by d plus a in a simplified form of d? Correct, no problem. कहीं पे भी आप पुट करो, बट लॉजिक क्या है, जहां पे d था उसके जगह पे क्या आ जाएगा, d plus a. ठीक है, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आने दो या वो ब्रैकेट रेज़ टू स्क्वायर उस फॉर्म में आने दो, इट डजंट मैटर. ओके, द रिजल्ट इज लाइक दिस. Instead of d, just write down d plus a. ठीक है, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में बस क्या होता है कि स्टेप्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपको और भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए बस मैंने वो एडजस्ट करके लिया था. बट इट इज टोटली योर चॉइस. ओके, एक दो स्टेप्स इंक्रीज भी हो जाते हैं तो कुछ सोल्यूशन डिफरेंट नहीं आने वाला. इज देयर एनी अदर डाउट? These 3 questions are enough. Okay, on this last case is important, इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ उसके ऊपर. और भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐड कर देता हूँ असाइनमेंट में. दैट इज इनफ फॉर योर फाइनल एंड सेम एग्जाम ऑल्सो. ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा. जितने एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ और जितने असाइनमेंट में ऐड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल अबाउट M3. ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस 6th केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड वी हैव कवर्ड up to case number 6. So in next lecture we just start with the case number 7, last case. Okay, वहीं पे आपका 30-40% सिलेबस हो जाएगा यूनिट 1 का. मैंने आपको पहले बोला था कि ये शॉर्टकट मेथड ही लेंदी है, अदरवाइज सिलेबस आपका क्विकली हो जाएगा. ओके, देयर इज वन मोर डाउट. d square is an operator, then how we are applying rules of polynomial to do it? Because those rules are also applicable for polynomial function also ना. For example, f plus g. Okay, f plus g, उसको एक ब्रैकेट में डालो एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट कंसिडर x. तो इसका मीनिंग क्या होगा कि f plus g आपका ऑपरेटर है, आप x के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो. x इज योर polynomial फंक्शन. तो आप उसको कैसे लिखते हो, f of x plus g of x. तो जो polynomial के रिजल्ट्स है वो सारे इसमें यूज हो रहे हैं. Results are true. Yeah, basically the answer of this question is all the मतलब taking square. ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर मैं इन डिटेल में देखता हूँ ना, तो मतलब आप यहाँ पे ऑपरेटर का स्क्वायर ले रहे हो. ओके, आपने जो रिजल्ट लर्न किया है a plus b होल स्क्वायर, दैट रिजल्ट इज, इसका क्वेश्चन अच्छा था. ओके, मीनिंग क्या था, क्वेश्चन बाय प्रसाद. ओके, एक्चुअली इसका क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपांशन है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज फॉर रियल नंबर्स ओनली. ओके, व्हाई दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑपरेटर. ओके, बट ऑपरेटर के लिए स्पेशली फॉर डी ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर, ऑल दोज रिजल्ट्स आर ट्रू. इन जनरल फॉर एनी ऑपरेटर द रिजल्ट्स आर नॉट ट्रू. सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. इन जनरल फॉर एनी ऑपरेटर दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू. आई थिंक आपने वो रिजल्ट देखा होगा. मैं आपको कोशिश करता हूँ, आपको देखो समझ में आ रहा है कि नहीं. एक M2 में या M1 में पार्शियल डेरिवेटिव का जो टॉपिक था, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी वाई का होल स्क्वायर, डैबा बाई डैबा एक्स प्लस डैबा बाई डैबा वाई का होल स्क्वायर टाइम्स वाई इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. पता नहीं कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, बट इसमें कैपिटल डी ऑपरेटर के लिए जो भी सारे पॉलिनोमियल्स के रिजल्ट है वो सारे यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं. ओके, बट इन जनरल इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी रैंडम ऑपरेटर. सो डी इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेटर. ओके, किसी भी रैंडम ऑपरेटर के लिए ये सारे रिजल्ट्स ट्रू हो जाएंगे ऐसा नहीं है. सिंपली आपको मैं वही बोलता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर डी ऑपरेटर, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. Any other doubt?
Is there any other doubt? Okay. Okay, so now from my side I will end this session. Okay, there is one doubt, but d square plus 3d square, here we are increasing the order of differential, but 4 is just the power. Okay, power and order are different. Okay, see, here you consider a plus b raised to 4, correct? यूज दैट फार्मूला, वो फार्मूला आप यूज करो और फिर इसका एक्सपांशन लिखो. ओके, बट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि रेस्ट टू 4 मतलब क्या है कि सेम टर्म को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो करके आप देखो बोथ आर सेम. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो डी स्क्वायर है, ओके, जो उसके ऑर्डर है, यहाँ पे जो फोर्थ पावर है, ये एक्चुअली सेम ही होता है. तो आप जैसे a प्लस बी रेस टू 2 का जो कैलकुलेशन करते हो, विच इज वेरी सिमिलर टू d प्लस a रेस टू 2. वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑपरेटर में जितने भी रियल नंबर के रिजल्ट थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी रेस टू 4, वो सारे ट्रू हो जाते हैं. ओके, देयर इज नो डिफरेंस विच नंबर इज पावर, विच नंबर इज डिग्री. ये सारे आप ऑर्डर ही कंसिडर करो, क्योंकि ये 4 भी एक्चुअली क्या ऑर्डर है. आप चेक करो ना, डी स्क्वायर प्लस 3d रेस टू 4 है, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता तो ये क्या, यहाँ पे क्या आने वाला है, डी स्क्वायर का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा. सो डी रेस टू 8 आने वाला है ना कहीं पे. ओके, सो एवरीथिंग इज द ऑर्डर ओनली. ओके, सो एवरीथिंग इज द ऑर्डर, बट दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू. ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा है, बट दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर एनी रैंडम ऑपरेटर. रिमेंबर दिस. एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर. आप ये सेम चेक करो, डैबा बाय डैबा एक्स प्लस डैबा बाय डैबा वाई का स्क्वायर रियल नंबर से करके देखो, एंड डैबा बाय स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, बोथ आर डिफरेंट. बिकॉज इन पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट ऑर्डर मैटर, कि आप पहले x से डिफरेंशिएट करते हो या y से डिफरेंशिएट करते हो, दैट ऑर्डर इज मैटर इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देयरफॉर दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज ट्रू. Okay, so with this I will end my today's session. Okay, and also I will share today's video. Okay, मैंने अभी रिकॉर्ड किया, तो इस सेशन का वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ. Okay, thank you.